Formation of question is informal. Then standard ways when you use, you can use this type of question in any form, in any situation. But here you have to ensure that you're using est-ce. Hey there, welcome to frenchnyou, your go-to place for affordable live online French courses. Whether you are a beginner or preparing for DELF or DELF exam, we have got you covered. Join our global community of more than 25,000 learners from more than 45 different countries with 2 million plus views on YouTube. On our website, you can rate your own French level and pick the batch that suits you best. We offer multiple time slots and you get to choose two preferences at the time of registration. Every French course includes 2 mock DELF practice exams and a course completion certificate. Visit frenchnyou.com to explore course details, success stories and more. Yeah, you started this IR verb, na? We have done the Shorty and verbs, right? shorty. Yeah. We have done sortir also, ma'am. Or sortir was not done. Yeah. No, Shorty and shorty. Nahin, shorty is done. The chapter, na? Sortir is done. No, this No, one, this one. this is not. nahin, this The verb, verb is verb. not done, right? ये नहीं कर Because रहे. sortir is an irregular verb. So the conjugation of sortir is not similar to the regular IR ending verbs. Okay. So let me write down the conjugation of sortir verb over here. So sortir means to go out. Okay. So je sors, tu sors. Then we have elle sort. This time SORT. Okay. Then nous sortons, vous sortez, elles sortent. Okay. So we have these endings are different, although it is an IR ending verb, but the endings are different because these are irregular verbs. Yeah. Then similarly, we have one more verb that is partir. Partir is like to leave. Okay. The conjugation is similar. Je pars, tu pars, elle part, nous partons, vous partez, elles partent. These are both IR ending verbs, but the endings are different. It's more like ER only. No? Correct. More like ER. Like ONS, EZ, ENT. The endings are almost similar to Yes. ER ending verbs, but yeah. We cannot generalize it because these are irregular verbs and IR endings. So this is how we have to, remember this. Right. Otherwise, regular ones we have already done. IR ending, like choisir, right? So normally the endings with the IR ending verbs are IS, IT, ISSONS, ISSEZ, and ISSENT. Normally with the regular ER ending, regular IR ending verbs, these are the endings. IS, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT. Okay. So here we will understand how to frame questions. I know we have already done this earlier, but again, it is gonna be, we'll revisit this page. What are we doing? The interrogative, no? Yeah, la forme interrogative. So we have done this topic earlier also, like when we were doing dossier 1, lesson number 2.
We have already done this. In Hmm. Yeah, dossier 2 also we have done this, right? yes. Now we are doing this again in dossier number 4, lesson number 5, just to understand a few more things. Okay. So here we have how to ask questions, orally or in writing also. Hmm. So we can use these type of interrogative adverbs like, for example, ou, como, quand, and informally we can say quand vous sortez. Quand vous sortez means When are you going? when are you going? Okay. Then say où. Say où is like Where, where Okay. is it? where is it? Say, okay. And standard way is using interrogative adverb plus est-ce, right? Using est-ce will make the question a bit more standardized. So, comment est-ce que vous partez? This time partez. Comment est-ce que vous partez? So, when are you leaving? Right? Then, comment est-ce que vous allez? When are you going? Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous allez is like, how are you going? Yeah, como. Then formally, how we can say? Formally, we can simply use the interrogative adverb and also we have to make the inversion, Hmm. right? So, où sortez-vous? Où sortez-vous means where are you going? Okay, avec qui sortez-vous? Avec qui sortez-vous is with Hmm. whom you are going. Hmm. Okay, then these are all like open-ended questions like quel âge as-tu? Que voulez-vous? All of that. Que voulez-vous is what do you want? What do you need? Yeah. Then sortez-vous souvent? This is like a close-ended question. Question fermée. Here it means like do you often go out? Hmm. Hmm. Hala. Like question formation, uh it's just like that, like when you will be writing a few things, like when you will start writing more, or like orally when you will start talking to each other, ask Hmm. questions to each other, you know. So in that way, you'll be able to get into practice for this. If you want, we can do an activity for that also, like framing questions. If in case you feel you want me to make you practice. Yeah, because question forming, I think it's a challenge because Okay. Okay. So let's do one thing. Uh, let's do an activity where you both have to pose at least 3 questions to each other. Okay, and the other person will be responding to those questions. Now, words, from where you can take the words, you can take the words from the chapter that we are doing right now, from our dossier number 4, lesson number 5. Use the verbs, use IR ending verbs, use sortir, use partir, and then out of these, like, familiar, standard, formal, you can use, you can make one question from each. Like you make one question informally, one question standard format, one question formal way. Okay, so ask three questions, and another person will respond. That's how we can do a little bit practice. What do you say? okay. Fine. Consider any situation, use any word from the chapter that we are doing, Hmm. and don't forget to use the verbs sortir, partir, or any type of choisir, any type of ir ending verb like choisir, réussir, grossir, whatever you want to use. Fine. Hmm. And every question has to be different. Like one question informal, another question standard, another question formal. But like, what is the difference? Maybe after the exercise, you can tell us the difference between these three form of questions, or you've told us already. So the first one, Anubhuti, familiar is the informal way, like Ah, when you make the question, like for an informal situation, right. like you're talking to somebody, and like anyone, but that will be a kind of more of an informal situation. Hmm. Okay. For example, quand vous sortez,
even if you are using woo, but still the formation of question is informal. Then standard ways when you use, you can use this type of question in any form, in any situation. But here you have to ensure that you're using est-ce. Formal situation, formal question is like you have to use inversion and Okay, yeah. use it in a bit of more formal situation. So one more thing, Parth, Mm-hmm. do we use a verb after quand? After, Any question like quand, yeah, quoi, quel? Do we use a verb or verb कह रही हूँ? हाँ, verb as in if suppose I have to say नहीं see uh, वैसे तो if you are using inversion तो उस केस में फिर you will be using verb. For example, où sortez-vous, right? तो हाँ here तो sortez is the verb, right? But this is done only in case of inversion. Otherwise, you have to use like a normal form, like quand vous sortez. So vous is a subject over here, right? So check accordingly. like one more thing, Parth. Suppose generally I have to say what was you saying. So is it right to say quoi tu parles? Ma'am, I didn't get your question. So quoi tu parles is right. Quoi tu parles? What you said हो गया ना वो? Hmm. So you can say then qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? What did you say? Qu'est-ce que tu dis? This is how maybe you can ask, you can say this question. Qu'est-ce que tu dis? It takes time actually to form a question. It will come only with if I start making questions generally. Okay. What do we call think in French? Think is like pense, Pense, yes. pense verb. Qu'est-ce que tu penses, Tanubhuti? Is right? Yes. Qu'est-ce que tu penses? What do you think? So I think I have to. Hmm. So I mean, this question formation will be enabled once you start writing more. I'm practicing on writing more because I feel that when I write, I feel there are a lot of things. It's, it takes time for me to form a sentence, basically. Like I made a आपकी sentence when about a you be giving neighbor. for when you will be giving your speaking exam, na? Hmm. DELF exam. So there will be a question like this. I mean, there will be the second exercise is going to be about framing questions to the examiner. Oh, okay. Okay. There, yeah, I mean, I don't know if I have I told you earlier about this or not, but then they will be giving you a set of words. Out of them, you have to choose two words, and based on those two words, you have to frame question for the examiner Okay. Hmm. and on the spot. That means you have to practice because even writing about the neighbor, I realized when she gave me the corrections, I realized what I could have done like that because in my mind I was just constantly making sentences, and I realized that in that way also I could have started writing. कि मैं पहले Mhm. names बताती and then True. so part is we have to use verb jouer, which is to play. Mm-hmm. So what do we use before it? Like to play will be the jouer verb. Like You can use uh, simple subject. I mean, to conjugate it with the subject. That's it. Simple. uh, But jouer will be er ending verb, right? but I'm using, yeah, if I have to say
when are you coming to play? So it will be tu viens ici. Quand pour jouer. pour jouer. वही मुझे पूछना था. So then jouer will be not conjugated, no? Jouer will है not ना? be conjugated then. So it will be jouer only. Right. अच्छा, that is right. Second question is standard question. So I have only written est-ce que tu sors avec ऊपर वाला ये then famine or weekend. So I did not complete it. कौन से वाले में? Second question, first question, the second part. I have written a standard question. Est-ce que tu sors avec ऊपर वाला ही continue है family or weekend. So I did not complete the बट sentence. आपने एस का कैसे बनाया है? हमें ये EST होता है. Oh yeah, you remember? I have this आप ये देखो EST. यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले इसमें. मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे बना हुआ है ना. तो दिस इज हाउ एस का हैज टू बी रिटन. ना मुझे लगा आपका नीचे एस I का have corrected it. I have corrected it later. Yeah. I एस का forget तू how सौ that is. अवेक. मैम इसमें एस का तू सौ अवेक इजंट इट इनकम्प्लीट? हाँ, that's what I'm saying ना. आवेग के बाद it's continued ऊपर वाला family or weekend. So अच्छा अच्छा dot अच्छा. dot dot लगाया. बट यहाँ पे आएगा एस का तू सौ अवेक ताफामी. ओके तो TA विल वी हैव टू ऐड ताफामी. अच्छा यहाँ पे ना आपने AU लिखा है मैम. तो यहाँ पे AU नहीं आएगा. In case हम्म. when we're talking about weekends, so we हम्म. use only le weekend. Okay. O weekend हम कभी नहीं लिखते. O weekend का मतलब हो गया like to the weekend. Like to the weekend won't make any sense. अच्छा. Okay. You aim with S because aim is an हाँ, I मैंने देखा. ending mood, right? हम्म. You हम्म. shwazi qua. Mm, you aim. You aim. As in you like tea or coffee, you choose what? हाँ तो हम इस केस में आएगा you aim le te u le cafe. Le article is required. Then quel tu choisis नहीं मैम. qu'est-ce que tu choisis? Kale is which or what? नो यहाँ पर विच और व्हाट होता है बट यहाँ पे इस केस में कैल आप इस केस में यूज नहीं कर सकते. आपको कैल इज लाइक नो आप यहाँ बोल सकते हो कैस कत यू प्रिफेयर और कैस कत यू शुआजी. व्हाट डू यू चूज और व्हाट डू यू प्रेफर. That's what it is confusing. If we say Kel, which means which or what in some cases. हाँ जी. Okay, so we have. So how do we find out this is wrong or right if we use आई like टेल यू. this? जब आप कैल आप तब यूज करते हो जब आप किसी चीज के बारे में कुछ कंपैरिजन करते हो. लाइक फॉर एग्जांपल विच इज लुकिंग बेटर. ओके. और Okay. or like quel est votre prénom. जब आप किसी चीज के बारे में पूछ रहे होते हो लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर प्रेफरेंस और व्हाट इज योर नेशनैलिटी. तो फॉर ऑल दीज ये केसेस preference ही तो थी. What do you choose? Tea or coffee? quel tu choisis. तो फिर हमें यहाँ पे Kel थोड़ा करना पड़ेगा. होते हैं. लेट मी राइट इट फॉर यू. हम्म. आप लिख सकते हो ऐसे quel boisson préfères tu. Okay, you can use it like this. Quelle boisson prefers-tu? That means which beverage do you prefer? Okay, Then this then you can say also. latte, the tea, or coffee. Ou le café. Are you understanding? This is how you can use. क्योंकि ना कैल के बाद कभी भी डायरेक्टली वो नहीं आता. डायरेक्टली आई मीन सब्जेक्ट नहीं लगाते हम. लाइक जैसे बोलते हैं ना कैल 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 नोत्र नेशनैलिटी ऐसे नहीं बोलते. हमेशा ऐसे आता है या तो वर्ब आएगी कैल ए वोत्र नेशनैलिटी या फिर एक नाउन आएगा कैल बॉइसॉन कैल शमीज कैल पोंतालों.
Are you getting my point? Hmm. Quelle boisson? Boisson is like beverage. So which beverage do you prefer? Tea or the coffee? Ça va? So it cannot be quel choisir tu also. A Quelle? verb cannot come after quel, is it? No, no, verb can come after quelle. Why not? Then quel choisir tu भी नहीं हो सकता. Quel Quelle choisir choisi tu. तू? quelle what? quelle choisi तू मतलब quelle आप किसके लिए रेफर कर रहे हो? आपको बताना तो पड़ेगा ना कौन से बेवरेज के बारे में पूछ रहे हो आप, राइट? हाँ, which I've used later. हाँ, जैसे quel tu choisis the thé और the café. वैसे ये बहुत इनकम्प्लीट सा साउंड कर रहा है, केल प्रेफर्ड त्यू या फिर केल श्वाजी त्यू। अब केल क्या है यहाँ पे, लाइक ये तो ऐसा हो गया कि विच डू यू प्रेफर, अब बंदा अपने आप समझता रहे विच क्या। हाँ, मतलब मैंने ऐसे लिखा था which you choose the tea और coffee. Quel tu choisis, comma the thé ou फ्रेंच में ना, café. फ्रेंच में थोड़ा इनकम्प्लीट साउंड कर रहा है वो। तो हम्म. केल बुआसों अगर आप लगा दोगे ना, देन इट विल मेक मोर सेंस। आई अंडरस्टैंडिंग। तो हम्म. बुआसों लिखना वहां पे थोड़ा मुझे कंपलसरी टाइप लग रहा है इस केस में। ओके। और या फिर if you're saying that if I don't want to put Warsaw, suppose it doesn't strike to me, so then it we can simply ask quel est tu choisis. हाँ, एब्सोल्युटली। वो ठीक है. हम्म। अच्छा. तो लिखना होगा. हम्म. देन फॉर्मल वे में लिखा है आपने श्वाजी, tu entre le café. Choisis tu entre le café ou le thé. और लिखा है ou tu préfères the thé toujours. You choose between cafe or tea, or you prefer tea always. Or I can just write choisis tu le café ou le thé. सिंपल बना दो। entre हटा देते हैं अगर. हम्म। choisis le café ou le thé. आप Adjectives आएंगे ना. राइट। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन उसके साथ में ही बनाया. would you prefer the tea toujours, or you prefer इसकी the भी tea जरूरत नहीं, always. इसकी जरूरत भी नहीं है, ये भी हटा सकते हो आप। हाँ, त्युपाक इसको देखने पर मार सेटर, दो, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट करोगे. दिस इज फाइन। quand quand est-ce que tu pars? The That- first part is pupa or set. Okay. Quand est-ce que tu pars? When do you pars have to? tu quand, नहीं pars tu quand, नहीं नहीं मैम, मोस्टली ना इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स पहले आते हैं स्टार्टिंग में। ओके, मोस्टली मतलब अच्छा, नीचे. सेंटेंस के ओके. स्टार्टिंग में आते हैं। पर इससे ना सोते वो सुबह. हाँ तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव आती. होते हैं। अच्छा, सोते वो सुबह में फिर कौन क्या नहीं कुछ नहीं आया. So it should be passive or cease or set is right. पाख्त्यू असीसा, हाँ दैट इज फाइन, बट अगर आप कौन भी लिख रहे हो तो आप सिंपल लिखो कौन पाख्त्यू, सिंपल। क्वेश्चन ये टाइम लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट? कौन पाख्त्यू, उसके अच्छा, बाद फिर स्टैंडर्ड वाला ठीक है. कौन इसका के पास. हाँ सैंड वाला इज फाइन। देन आपने लिखा है त्यू विया इसी कौन, पूछ हुए, ये कौन मैंने क्यों ऐसे आया कर. यहाँ पे मैम? ट्यूबिया इसी को पूछ हुए, मतलब यू कमिंग हियर. व्हेन When? टू प्ले। अच्छा. When are you coming to play लिखना था. एंड इनफॉर्मल भी था. तो तो आप कौन हटा दो, कौन की जरूरत ही नहीं है। त्यू श्वाजी ल होली उल दिवाली। ओके, आर्टिकल। Yes. एस्क त्यू Uh, ग्रोसी Don't holy. In holy. pendant la fête de Holi, से लिख सकते हैं हम, during the festival of Holi। ओके, Okay. pendant, Introduction. इन होली नहीं लिखेंगे,
हाँ, Pendant la fête de वही, okay, Doli. Doli. Pendant la fête. So that is pendant is during. Yeah. ये Yes. कौन सा वर्ड लिया तुमने ग्रोसरी Glossy is to gain weight. Quand as-tu fini? अच्छा De jouer. Uh, नहीं, वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है. okay. अच्छा, what do you want to say, Anupati here? When did you finish playing Holi? Okay. So, है quand pars-tu? That is fine. Avec qui sortez-vous? That is fine. Comment est-ce que vous réunissez? I mean, how do you succeed? Acha. Okay. But can we add some context also, like succeed in what? Okay, like in Réussissez dans l'examen, l'examen, maybe? yeah, yes, yeah, Examen de la langue française. yeah. I'll just plug in my charger. Sorry. Hmm. Tu as maigri. Like you lost weight or you something like this. Okay. Est-ce que ton ami rougit? Bah, ok. Où sortez-vous? Vous choisissez de sortir. आपने ये भी है ना? Tu sais comment lire livre le livre. This is good. आपको समझ आया क्वेश्चन व्हाट इज इट Hmm. समझ आया क्वेश्चन हाँ, you know how to read this book, है ना? you know about this book right okay Hmm. It's fine. Uh, Quel, कैल quel, से टू livre नहीं. हाँ अब यहाँ फिर कैल आ गया अगेन कैल इज माय इशू आई बिलीव तो कैल के बाद आई वांटेड टू आस्क टेक यू ओके, सो अनुभूति, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना आपका, yeah. से द sortir, है ना? तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है. वो यू चूज टू गो आउट, है ना? इट्स लाइक दैट. You बट choose to go out विच to प्लेस डिड यू चूज टू गो आउट, ऐसे लिख सकते हैं हम. विच प्लेस डिड यू go चूज? out to the okay, okay, and तो विच प्लेस कैसे बोलेंगे हम यहाँ पे? सुगंधा में बताएंगे. हाउ विल वी यूज, विल वी कैल कैल एस्का प्लेस को क्या बोलते हैं कैल कैल लियो. एस्का tell you कैल लिया choose to go out. कैल लियो. Vous choisissez ओके Okay, de sortir. कैल लिया वो so that means कैल के बाद it has to be something as in a noun basically what I'm understanding is basically some place name animal something कुछ भी that there should be something and then the verb and the conjugation ऐसा भी तो कर सकते हो, basically अपार्ट फ्रॉम कैल दैट के आप ऐसे बाद भी बोल सकते conjugation नहीं है हो. आप ऐसे भी बोल सकते हो. कैल ए वोत्र कूलर प्रेफेरे. and okay, and like कैल के बाद डायरेक्टली वर्ब भी आ सकती है. बट एक्चुअली डिपेंड्स, लाइक यहाँ पे द क्वेश्चन मीन्स व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर प्रेफर्ड कलर. ओके. and if we say like in so when we are using kel तो ये तो फिर familiar हो जाएगा ना या formal हो जाएगा. What can like kelly this दिस इज इनफॉर्मल ओनली. फैमिली family है ना बाय family. फैमिली है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे एक तो हमारी इन्वर्जन भी नहीं लग रही है. देर इज नो इन्वर्जन, देर इज नो एस्क, तो स्टैंडर्ड भी नहीं है. दैट मीन्स इट्स नॉर्मल इनफॉर्मल क्वेश्चन. फैमिली है, फ्रॉम से फैमिली है. And what I wrote like
Like vous choisis de sortir avec ton mari. With your, you choose दैट इज ऑल्सो to go out गुड. with. एक बार आप दोबारा बता सकते हो क्योंकि मेरे पास पिक्चर अपडेटेड नहीं है वो वाली. हाँ, vous वो choisissez श्वाजी से. choisissez de sortir avec ton mari. avec votre mari आएगा क्योंकि जब Avec आपने votre. Yes, yes, sorry, yeah, votre. वो श्वाजी से de sortir avec Votre mari. votre mari. That is good. Like, I try to complete my incomplete question. This is correct. This is correct. You choose to go out with your husband. This est-ce que ton ami rouge is correct? The first, I Did think, your friend blush? It's like that. yeah, yeah. Actually, You guys can do one thing whenever you want to ask something. on- In the group, yeah. Ask in French. We can do it हाँ, that way. Right? that's Ask a any good. one question. For example, do I have to do this question today? So how will we Hmm, make this question? Do I have to do this question today? Or do hmm. I have to listen to this podcast today? Or maybe how, I mean, please suggest some good podcast. Just an example. Anything, any question you guys can put up. अगर हम कोई सैम्पल क्वेश्चन लें जैसे फॉर एग्जांपल डू आई हैव टू डू दिस क्वेश्चन तो कैसे बोलेंगे? est-ce एस्क. que je, एस्क कैसे भी बना दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. एस्क लगाओ कोई दिक्कत नहीं है. एस्क je dois, डू आई हैव टू. Est-ce je que fait एस्क je dois. je dois, you have to, the dois question faire. aujourd'hui? Have to do ना. Have ah, to. yeah, okay, you have to do. Je dois faire La question aujourd'hui? Yeah, is cette question. yes, no, that is okay. Cette question. Simple. और क्वेश्चन की फोटो भेज दो साथ में. You have to do this question, Okay. right? Otherwise, if you want to say the question number this on this page, so how will you say? Est-ce que je dois faire la question numéro, let's say, de Page. à la page, maybe let's say 75, right? So they say number को n degree sign ना, that is number, हाँ. है ना? N in degree. Right. And one more thing I got confused now. Est-ce que je dois faire la question? So doit is must. So Yeah. but when Do we I are have to? saying, we were Have to or saying, must? oh, do I have to? Okay. Okay. Must or to have to. Do I Hmm. do? So, I mean, like, just try to make question, okay? Even if it is wrong, I'll either me or either Eliza will correct Yeah, it. yeah. और अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल यू कैन आस्क क्वेश्चन. हाउ वाज योर होली Day. सेलिब्रेशन? है ना? हाउ वाज योर Yeah. डे? राइट. रैंडम क्वेश्चंस लाइक डेली रूटीन टाइप क्वेश्चन. हाँ, एक क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ेगा. Absolutely. You can put up on the group. And sometimes you can choose to make a question from the verbs. Like, Absolutely. Like like maybe your how friend. is the health of your father, Sugandha ma'am, now? Right? Mm. These are like random questions, or maybe Anubhuti, how is your son? Right? So Hmm. maybe any plans to go out this weekend? है ना? तो Yeah. ऐसे रैंडमली डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आप एक दूसरे से. दैट विल हेल्प. We So have to. okay. Any plans को कैसे लिखेंगे? Any plans? Est-ce que vous avez des projets pour le weekend? Pour le weekend, projet, okay. Projet is like projet doesn't mean the projects. Projet also means plans. Okay, Plans. so you can ask the question like this. I'll be sharing my screen. Oh, Uh, चलो क्या हो गया? Kel, Okay. why Kelsey. Kel? अब यहाँ पे केल जब मैंने लिखा है तो मुझे एस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं प्लूरल में बात कर रहा हूँ. व्हाट आर, राइट? तो केल Hmm. सॉ वो projet de la semaine prochaine. Just an example.
what are your plans for the next week? Yeah. Okay. Chalo. That That's all. See you.